you are? I think I'm a citizen in progress, yeah. I mean, of course. That's a nice description. I am that. I mean, I think we all are. I think we have one life to live, and there is so much to do. We shouldn't be defined just by our work. We shouldn't be defined just by our social media or just by films. I wouldn't be like to be known just as an actor. Actor, singer, daughter, wife one day. That's very important. You know, there's so much. I'm a citizen in progress. I think till my dying day, I'm going to try and do something new and keep adding to the chapters of my life. And let's see what my life story is going to be. Wow. It will be a hit. That we're sure of. I want a blockbuster. Hit is not enough आजकल. वो भी आएगा. धीरे आप ऊंचाई छू रहे हैं. Thank you so much. Thank you. अच्छा पर एक परिणति एक बात बताइए. आज इस मंच पर आप हमारे साथ आई हैं. ये मंच है स्वच्छता और पानी का. It's a big message world toilet day. हमने एक कॉल टू एक्शन मांगा है हमारे दर्शकों से. हमने उनसे पूछा है कि वो 5 चीजें क्या हैं जो आपको लगता है हमें मिलकर ये अगर जिम्मेदारी लेनी है. तो आई एम गोइंग टू आस्क यू द सेम क्वेश्चन. ये 4-5 चीजें जो आपके दिमाग में आता है जो हमें करने की आवश्यकता है एज अ कंट्री, एज अ पीपल. देखिए, ये जवाब देने के लिए ना मैं बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हूँ, क्योंकि एक तो मैं एक छोटे से शहर से आती हूँ, अंबाला से. और दूसरा मैं एक औरत हूँ. तो हम लोगों का जो एक्सपीरियंस होता है, लेट्स बी वेरी क्लियर, using a bathroom is very different for men and it's very different for women. Just biologically speaking, हम visuals में नहीं जाएंगे. Absolutely. But that experience is so different, and hence we require a minimum basic level of infrastructure and cleanliness. So I don't know if it's 5 or 10 pointers, but I genuinely feel cleanliness and usage of water is something that I have struggled to see at a certain level in our country. And I feel it's amazing, because 10 years ago we used to complain, अरे हमारे लिए infrastructure ही नहीं बना, अरे हमारे लिए तो toilets है ही नहीं. हमारा वो complain होता था. आज के दिन हमारे पास वो है. I see such a difference when I take road trips. I see public toilets there. When I see airports, train stations, the public toilets are so amazing. The infrastructure is provided to us. The citizens are not doing what they should. So here are my points. I feel there's more responsibility to be given to the men out there. Absolutely. Because I genuinely feel if they keep it clean, because women are a little more responsible, because we know exactly what the next woman bichari will have to go through. So we're quite conscious. But I think overusage of water, wet bathrooms are the worst thing, because they are breeding bacteria, they are breeding diseases. You could slip and fall. So honestly, ये जो स्वच्छता और पानी है, ये सबसे ज्यादा इन bathrooms में use करनी चाहिए, because हम लोग over splash करते हैं. हमने थोड़ी bill pay करना है. जितना मर्जी पानी, you know, I have entered airports and अभी भी नल चल रहा है. That previous person वो आधे घंटे पहले निकला है या 1 घंटे पहले निकला है, हमको नहीं पता. So I feel honestly the #1 problem is overflow of water. अगर हम एक simple सी चीज करें कि नल बंद कर दें और चले जाएं और सूखा रखें, I think we'll all be very happy. और साफ रखना कि अगला जो आ रहा है, जब वो टॉयलेट्स है उसको साफ रखना. आपने सही कहा कि मर्दों की जिम्मेदारी है. जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक आंकड़ा है कि 68% in our country it's women in homes who are responsible or who are cleaning the toilets, even in the home. The men don't do it. आज वर्ल्ड टॉयलेट डे तो है, आज वर्ल्ड मेंस डे भी है. और एक और now take a hint ले लीजिए. Women's Entrepreneurship Day as well, and to the point that you were making, Pariniti, that it holds, you know, the lack of a clean toilet holds women back from looking for opportunities to go out to work or just live their lives. So on Women's Entrepreneurship Day and World Men's Day, the men have to do better. Absolutely. And the men we have to send out this message as well. True. The men have to come together and they have to take this pran, or maybe one of the things, change makers, that they will help and they'll make sure that they also contribute towards keeping the toilet clean. So should we call 2 change makers? Yeah, absolutely. We must. Joining us now, 2 very special guests from Reckitt, Saurabh Jain, Regional Marketing Director, Hygiene, South Asia, Reckitt, and also Ravi Bhatnagar, Director, External Affairs and Partnership, South Asia. A round of applause for the 2 gentlemen. Hi.
Thank you for partnering with us and also working with us. Hi. Thanks. Good to see you. Lovely to meet you. Same here. Hi, Ravi. Thank you so much. Hi, lovely to meet you. Hi. So let me first ask you, Ravi. Lost your mind. What is the vision when this whole campaign started? Because when we wanted to do it because Swachh Bharat and Swachhta happened, and then Reckitt came in and partnered with us, and you've been with us through thick and thin. Yeah. So it's now become a mass movement. Yeah. I will tell you honestly, and I'm saying this on air, I've had people come out and say, "Aap telethon kar rahe hain? Hame aana hai. We want to be part of this. We want to join the cause. So join us." I was one of them. Thank you. So very interestingly, like the journey started with the Prime Minister's announcement from the Red Fort. And we were among the first few companies in India who said like, yes, we are together and we should do it collectively and we should not stop. It should be a mass movement. We should have, civil society with us. We should have the media with us. We should have the government with us. We should have the policymakers with us. We bring the best practices across the world because Reckitt is in 60+ countries, and we thought like, there's a lot of mutual learning from one country to another. We bring everything put together and let's make it grand. And the behavior change should take place. In the earlier conversations, when Prime Minister Modi met Theresa May, we were the one as a company who gave the midterm health check of Swachh Bharat to both of them. The great thing is like, the PMO took the cognizance of that. And there was a major change in the spends on behavior change from the overall total budget kitty. Right. Because constructing toilets was the one thing. Most important is sustaining those. Yes. And, like Pariniti, you just rightly said, like, involving men also in the whole process. Oh, absolutely. And yes. इन दोनों को आप ही बोलो, परिणीति और श्री बोलो, इन दोनों को बोलो, दोनों men हैं, इन दोनों को बोलो. So change begins with us. Absolutely Change right. begins with us. So that was the first campaign we started with. I'm very proud to tell, like, the change begins with us, and we are still making it as a mass movement. Yeah. Together with Network 18. And we're very sure, like, in the times to come, like, the behaviors are going to stay. Yeah. In the most difficult terrains also in India. Absolutely. And with, some of the best brains working in the Reckitt. Right. And the best brains in Network 18 and others. Absolutely. We'll be co-curating the program in such a way, like, that will show the path to the other countries which are still struggling. Absolutely. The main theme for this World Holiday is making the invisible visible. So to make it visible, it's important. Like, we learn, we nurture. So what are the solutions that you're going to bring? आप क्या करने वाले हैं? क्योंकि समस्या है, तो उसका समाधान चाहिए. हम तो problem नहीं देखते हैं, हम opportunity देखते हैं, solution देखते हैं. तो आप बताइए. 100%. अगर आप देखें, I mean, like Ravi was saying, in 2015 when we started, and till now, I think we made massive stride as a country, right? I mean, we were talked of as an open defecation country, and we've now got it free. Yeah. But even if you look now, statistically, we're still 156th rank as far as sanitation index is concerned. So still, while we acknowledge and we can thump our back, etc., to say we made massive progress, There's a long distance to go. Yeah. And I think the inclusion of the word "milkar liye zimmedari" is supremely important in this, because what policymakers could have done, what government and all big-time efforts could have done to get us here has happened. Yeah. But now it is all about individuals to come together as collective society, like Pariniti was talking about gender, but beyond gender, also about socio-economic system. Everyone needs to now contribute to take the sanitation forward. Do I have time to interject? Yes, of course. We were talking about behavioral changes. I'm sure a lot of you will relate to this. When a group of 5 girls tries to use a public bathroom, there'll always be that one leader who goes and checks, and then she comes out and she says, good to go. ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं. आपने कभी लड़कों ये करते हुए देखा है? लड़के 5 के 5 अंदर घुस जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि ठीक ही होगा. So I feel, we're joking about it, but it's years and years of experience. It's a real challenge. It's legit. Like I've been on highways where I've sent my dad or my brother to say, you guys can go and use the bathroom anywhere, but let me know if I can, because I can't go out in the open. Yeah. Boys can go anywhere. No, you're right. It's a social problem, as Pariniti was saying. It's an economic problem. It's a health problem as well. So what's the road ahead, Saurabh? Take us through what's planned
for the next steps? I think just to Pariniti's point, I mean, you were talking about female. I mean, even when we have to stop, when we are going on the road trip and we have to stop, as males, if the male toilet is bad, we don't even like, I look back to my daughter and my wife and I like don't even step out because like if this is the state, it's not there. There you go. I think the single biggest thing, like you're saying, is the behavioral shift that's required. I think if I tell you statistically, 50% of the people who have toilet in India today still clean only with water and detergent. Khali pani छिड़क दिया, detergent डाल दिया, उसे साफ कर लिया. Think of it, it is a hotbed of germs, right? Even at individual household level, as much as it is in public domain, public toilet domain as well. So thereby the responsibility again has to be shared. It has to be everyone's to make sure that toilet to ghar pe aa gaya, but usko saaf aur surakshit nahi rakhenge, so we will spread more germs at home. And that's the behavioral shift. And that's what I want to pick up on, Saurabh. As you said, it is shared responsibility. And Ravi, I want to understand from you what the experience has been working, not just with the union government, with working with state governments, and more importantly, working with local administrations, because this cannot be a top-down thing. It has to really be a grounds-up or a bottoms-up approach, right? Very interesting again, like, you know, we started with the hygiene index. It was the Reckitt which started the hygiene index. We started with the one city in India. From one city, we reached to 10 cities, from 10 cities to 20 cities, from 20 cities to 25 cities, and further, the birth of the Swachh Sarvekshan we saw ourselves. With a lot of data and inputs which we started with the hygiene index, what we created. So they were all intertwined into that. And now there's a ranking, like indoors ranking, you see, you know, and other places ranking. So good part is there's a movement. And there's a good movement. But all the efforts needs to be sustained. You know, you're talking about cities, Anand, and we do have some of these administrators with us. Yes, exactly. The people who have to do it. But just as we call them, जो ये समस्याओं का समाधान, जो solutions की बात करते हैं, आप दोनों के लिए task है. आप you're in the business of sanitation. तो हर toilet को साफ रखने का काम हार्पिक का है. तो हार्पिक अगर गलती भी आपकी solution क्या मिला? आपको करो. But ऐसे हजारों sanitation warriors भी हैं जो बिना थके, बिना रुके देश के लिए काम कर रहे हैं. और इनमें से कुछ ऐसे IAS ऑफिसर्स भी हैं जिन्होंने अपनी कोशिशों से अपनी पोस्टिंग वाले इलाकों को ही बदल दिया. इन्हें अपनी इंस्पायरिंग सर्विस के लिए साल 2022 का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार भी दिया गया. स्वच्छ सर्वेक्षण की बात अभी रवि कर रहे थे. ईशा कालिया जी हैं, IAS जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO पंजाब म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी. पंचानिधि पानी, IAS एंड फॉर्मर कलेक्टर ऑफ सूरत, जो कि वहां पर कोविड कलेक्टर के नाम से मशहूर हैं, एंड करंटली सर्विंग एज वडोदरा म्युनिसिपल कमिश्नर. प्रतिभा पाल, कमिश्नर इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इज ऑल्सो ज्वाइनिंग अस. नमस्ते. मेरा पहला प्रश्न है पानी साहब से. पानी साहब कहां हैं? आइए आइए, पानी साहब आइए. Welcoming Mr. Paani on the Mission Paani stage. So the Odia roots now setting base in Gujarat. He was Commissioner Rajkot, Surat and now Vadodara. तो एक एक करके गुजरात में आप कर रहे हैं सफाई पर. एक बात बताइए, वहाँ तो कोविड कलेक्टर थे सूरत में, वडोदरा में अब आपको स्वच्छ कलेक्टर होना पड़ेगा. सूरत में भी काफी स्वच्छता के बारे में काफी अच्छा काम हुआ है. सूरत में खास करके जो गंदा पानी, जो ड्रेनेज का पानी है, वो पानी गंदा पानी होके वो डिजीज फैलाता है. लेकिन उस पानी को हम लोग रिसाइकिल और रीट्रीट करके 140 करोड़ का इनकम रेवेन्यू जनरेशन सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रहा है. दैट इज मैसिव. सेकंड, जो सूरत का जो कचरा है, वो कचरा हमारे लिए कंचन है. वो सर्कुलर इकोनॉमी जो कॉन्सेप्ट है, वो सर्कुलर इकोनॉमी वहां एस्टैब्लिश किया गया है. कचरा कहीं भी कचरा नहीं है, उसको हम मानते हैं कचरा है. कचरा को अगर रिसाइकिल और रिप्रोडक्ट किया जाए तो उससे काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है, जो काफी अच्छा हमारे लिए पूरा स्वच्छ शहर बनाया जा सकता है. ईशा जी भी हमारे साथ हैं. ईशा जी आइए. एंड प्रतिभा जी इज ऑल्सो विद अस. शी इज जॉइनिंग अस वाया द लाइव लिंक. Thank you. Hi, ma'am. Hi, lovely. Good to see you. Thank you so much for joining us. Namaste. Thank you. Thank you for coming. Aye. Isha ji, as we were just talking to Mr. Paani here, and he was telling us what they managed to do both in Surat and now in Vadodara. I want to understand from you what the experience has been like in Punjab. What were the big challenges that you had to face, and what are the priority areas that you're now focusing on?
As a state mission director for Swachh Bharat Urban in Punjab, so we're doing a lot of things in Punjab right now. So the first focus was to instill the sense of awareness and consciousness amongst people that cleanliness and sanitation is important. So for that, we launched a campaign recently that is Mera Shehar Mera Maan. So that means my city, my pride. Yes. So I take a sense of ownership to make my city clean, because Swachhta is all about bringing about a behavioral change, and it is a gradual, ongoing process. So what we do is every Friday we take a ward, the entire corporation team goes there with all the paraphernalia. We clean up the drains, the roads, the garbage vulnerable points, the hanging wires, the community toilets, public toilets, with community participation. So all the elected representatives are involved, the community is involved. So therefore, it actually brings in that thing that it is important. So we have a team of awareness generation people who tell you that how to segregate waste. Right. Dry and wet waste, how to actually do door-to-door collection, and how to do home composting. So all these things, apart from the community toilets and public toilets that we're talking about, a very important component of making cities clean is source segregation, Absolutely. processing of waste, and waste management, and getting rid of big legacy waste mountains that we have in our cities today, and that is our main priority in Punjab as of now. Well, we want to get a little more detail from you on the outcomes of this awareness campaign that you're running in Punjab. But let me also welcome Pratibha ji into the conversation. Pratibha ji, many thanks for joining us. Unfortunately, we would have loved to have you here on the stage, but you're joining us from Indore. Appreciate that. Take us through what the experience has been like in Indore. Of course, the track record speaks for itself. How do you plan to build on the momentum that's already been created? नमस्कार। इंदौर की अगर हम लोग बात करें, जब हम स्वच्छता और पानी की बात कर रहे हैं, तो ये किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं इंदौर के 6 लाख घरों की और 35 से 40 लाख पॉपुलेशन की। तो जो इंदौर में हम लोगों ने इन 3 चीजों पर फोकस किया है, जन आंदोलन के साथ लोगों को जोड़ने के साथ में मुख्य 3 चीजें, जो स्वच्छता का मैनेजमेंट है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें हम हर घर से कचरा अलग अलग लेते हैं, 6 तरीके के डब्बों में लेते हैं, हर दिन कचरे को प्रोसेस करते हैं और उस कचरे से प्रोसेस करके सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ, वेस्ट टू वेल्थ की तरफ जाते हैं और बहुत सारा इनकम अर्न करते हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें, वाटर और सैनिटेशन दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो टॉयलेट्स का हो, चाहे वो पब्लिक टॉयलेट्स का हो, यूरिनल्स का हो, ये प्रॉपर्ली कनेक्टेड है इंदौर में सभी 6 लाख घर सीवेज सिस्टम से, और वो सीवेज सिस्टम से कनेक्ट होकर के 100% जो ड्रेनेज सीवेज है उसको हम लोग ट्रीट करते हैं, रीयूज करते हैं 30% पानी को बचाने के लिए एक और चीज जो हम लोग कर रहे हैं लगातार, वो वाटर कंजर्वेशन को है। इंदौर के 6 लाख में से 1 लाख घर ऐसे हैं जो आज पानी बचा रहे हैं और जिन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट्स लगाए हुए हैं, चाहे वो कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो या फिर हाउस होल्ड हो। तो इस तरीके से हम लोग स्वच्छता, सैनिटेशन और पानी इन पर एक साथ काम कर रहे हैं। प्रतिभा जी, जो हमारी सफाई मित्रों की टीम है, जो डेडिकेटेड टीम है लगभग 7000 लोगों की, उनमें से 70% महिलाएं हैं। इस बात का मुझे गर्व है और लगातार जो हर मौसम में काम करते हैं। साथ ही जो यहाँ की जनता है, इंदौर के लोगों में जो ये प्राउड बैगेज है कि वो देश के सबसे साफ शहर से आते हैं, वो हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि हम कचरे को कभी भी मिक्स करके ना दें। हम जब भी कहीं बाहर हो, कहीं भी लिटरिंग ना करें। अगर हम बाहर हैं तो टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल करें, अपने टॉयलेट्स को प्रॉपरली कनेक्टेड करके रखें सीवेज से। तो इस तरीके की तैयारियां इंदौर ने पिछले 6 सालों से की हैं। हर साल हम लोग कुछ नया करते हैं। इस वर्ष की तैयारी ये है कि एक बार जमीन का कचरा साफ हो गया, पानी साफ हो गया। प्रतिभा जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, मैं आनंद बोल रहा हूँ। हवा के साफ करने की बारी है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूव करने की इंदौर ने तैयारी की है। प्रतिभा जी, मैं आनंद बोल रहा हूँ। थोड़ा सा डिले होगा आपको जब तक आपको आवाज पहुंचे, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रोहित शर्मा भी इतनी बार आईपीएल नहीं जीत पाए जितनी बार आप इंदौर क्लीनेस्ट सिटी का ये खिताब जीते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, फॉर्मूला क्या है? ऐसा क्या कर रखा है आपने वहां इंदौर में कि इंदौर के लोग सबसे स्वच्छ हैं या इंदौर शहर सबसे स्वच्छ है? कैप्टन की बात करूं तो टीम इंपॉर्टेंट होती है। तो इंदौर की टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, टीम बहुत कमिटेड है। टीम में अगर मैं बात करूं तो हमारी टीम है हमारे इंदौरियों की, जो इंदौर के 35 से 40 लाख लोग हैं। हमारी टीम में मेंबर्स हैं
हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो हमारे MP साहब हो, MLA हो, मेयर साहब हो, या हमारे जो कॉर्पोरेटर्स हैं जो फ्रंट फुट पर हमेशा खेल करके सफाई के लिए बैटिंग करते हैं। टीम की अगर मैं बात करूं तो हमारी जो मीडिया है लगातार जो पॉजिटिव कवरेज के साथ में काम करती है, और जो नगर निगम की टीम है जिसमें 17,000 म्युनिसिपल स्टाफ है, तो ये सभी टीम मिलकर के इस काम में लगातार काम करती है और हमेशा काम करते हैं कि शहर के लिए, स्वच्छता के लिए जो नए मैंडेट हैं उनको पूरा करें। And पानी जी क्या कहेंगे? There's a nice contest going on. Punjab's also won 4 awards at the Swachh Bharat mission. Isha ji, actually, see, Indore is always, a very inspiring model. And what makes Indore different? Because as Pratibha told, it's about, community involvement. We get a lot of information in our WhatsApp group also that we have in Government of India. So they tell कि एक दिन होता है इंदौर में कि जब सब छुट्टी पे होते हैं और उस दिन लोग खुद सफाई करते हैं. So that kind of community एक बार movement बन जाए. And people now have taking pride in this कि हम इंदौर से हमारा शहर साफ रहता है. तो अगर वो वाला जज्बा आ जाए लोगों में कि हमने अपने शहर को साफ रखना है, क्योंकि कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन कैन डू ओनली वन बिट. Absolutely. सो व्हेन इट कम्स टू एवरीथिंग, चाहे लिटरिंग ऑन पब्लिक रोड्स है, टॉयलेट्स है, आपके डस्टबिन्स हैं, बट देन ऑल्सो लिटरिंग का इशू है. सो एवरीथिंग इज अबाउट ब्रिंगिंग अबाउट द चेंज इन बिहेवियर एंड हैविंग दैट पैशन कि हमने अपने सिटी को क्लीन रखना है. That makes Indore very different. It does. We're trying to do this, and we're talking about passion, we're talking about shared responsibility and citizens' participation. पानी जी, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट, उस पे आपका क्या कहना है? व्हाट इज बीन द एक्सपीरियंस सो फार? काफी जरूरत है. देखेंगे तो अभी टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे रोड स्वीपिंग मशीन हो, चाहे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हो, चाहे हमारे जितने भी काम हो, उसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल रहता है. चाहे एजेंसीज हो, चाहे ऑपरेटर्स हो, वो सब उनका भी कमिटमेंट होना चाहिए. और दूसरी बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर में जब हम बोलते हैं तो एनजीओज भी हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, काफी सारे लोग. जैसे सूरत में मैं आपको बताऊं, ये जो सोर्स सेग्रीगेशन की बात है, सोर्स सेग्रीगेशन अगर नहीं होता है तो कचरे का वैल्यू जीरो हो जाता है. अगर ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और दूसरे वेस्ट अलग हो जाता है तो उसको वो रिसाइकिल करके फिर से उससे पैसा लेते हैं और उसको सब लोग चाहते हैं कि क्लीन. आपको मैं बताऊं, ये जो कोट्स हैं, ये जो पेट बॉटल्स हैं पानी पीने का, वो लोग फेंक देते हैं. उसका 10 लाख से 15 लाख बॉटलों से काफी हजार रनिंग मीटर का सूट पीसेस बनता है. और वो पॉसिबल हुआ है प्राइवेट सेक्टर से. मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर जितना अच्छा से और जितना तेजी से इस सेक्टर में आए तो उससे अच्छा स्वच्छता का जो स्पीड है, जो स्केल है, वो इम्पोर्टेंट रहेगा. और पूरे देश बात कर रहे हैं तो एक मेरा आपसे सुझाव है और रिक्वेस्ट है कि आगे से जब आप, कई लोग, हम लोग मैप्स यूज करते हैं ना, तो इस मैप में कहीं आपके पास कुछ पॉपअप आ सकता है कि क्लीन टॉयलेट हियर. यस है. हमारे जो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर है, आप कहीं भी गूगल लोकेशन पे ये करेंगे और वहां बोलेगा कि ये आपके 100 मीटर्स 200 मीटर्स में आपका टॉयलेट्स हैं और ये एस्टैब्लिश. और पहले टॉयलेट, आपसे यही कहा, टॉयलेट्स हैं पॉपअप होता है, क्लीन टॉयलेट है. ये बात कि जो टॉयलेट पॉपअप होगा वो वही पॉपअप होगा जो कि क्लीन हो. एब्सोल्युटली. आजकल क्लीन टॉयलेट से ज्यादा अभी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जैसे फीमेल्स हैं, सबके लिए स्पेशल व्यवस्था अभी शुरू हो गया है. अभी पहले जो नहीं था, अभी हर टॉयलेट्स में ये व्यवस्थाएं आ गई है. अभी ये मूवमेंट को, जैसे ईशा जी ने बताया कि सब लोग मिलके, जो यूज कर रहा है वो पहला स्टेक होल्डर है. वो अगर क्लीनली उसको यूज करेगा तो नेक्स्ट आदमी जो है उसको प्रॉपरली यूज कर सकता है. आई थिंक पॉइंट यही है जो मैं समझ रही हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन फोर्स हो या प्राइवेट सेक्टर का फोर्स हो, वो लोग कभी भी हमारी जो पॉपुलेशन फोर्स है उससे बड़ी नहीं हो सकती. वी सिटीजन्स आर द बिगर फोर्स, प्योरली इन नंबर, प्योरली इन इम्पैक्ट. So अगर हमारे behaviors change हो जाएं, then they are just aiding us and helping us. Absolutely. That really is the heart of the matter, the crux of the matter. Ravi wanted to say. Yes, Ravi. I just want to tell something very interesting. Like, you're from Ambala and you are in Patiala. Punjab. So when I go to Patiala, which is my hometown, I see a lot of competition in Murthal in the all the hotels. They say our toilets are the best toilets. Not just our parathas, but also our the cleanest toilets here.
So they have the boards of the cleanest toilets. Right. The whole belt in the Murthal, they compete for the finest and the cleanest toilets. नहीं वहाँ तो वो मूर्थल में एक जगह कर रहे हैं, इंदौर में तो आप कहीं भी जाइए सब साफ है, तो वो तो वही टीम वहीं से चैंपियनशिप ले गई. But we've got something special to present. We do have something very special to present, because as we've been saying that this is really a mission to get everyone involved, Mission Swachhta or Paani. We put together a preamble and we want to share that with Paani ji, Isha ji, and of course we will have it sent to Pratibha ji as well. This is really a mark of our gratitude for all the amazing work that you've done, an appreciation on behalf of Network 18 for doing what you've done. So can we have the preamble? Pariniti, I'm going to request you to Please hand it over. Hand it over to Paani ji and also Isha ji. Oh, wonderful. May I do a joint? Thank you. Yeah, and And Pratibha ji, we'll send yours. You can open it. You can open it, and please hold it out. See, Constitution में हमारा preamble है, और स्वच्छता और पानी में भी यहाँ हार्पिक Network 18 का preamble है. So that is something which we must not forget. So this is special, the thought process. The idea is that we'll take this pledge. तो ये स्वच्छता संकल्प है. मैं चाहूंगा कि इस preamble के जरिए आप भी इस मैसेज को अपने अपने एरियाज में जाकर इसको प्लीज ले जाएं. प्रतिभा जी, आपकी ओर भी आ रहा है ये preamble, and we will want you to send us a nice picture. Thank you so much. We appreciate your presence. Thank you very much for joining us here. Thank you so much. Thank you. I'm here only, right now. जी, सबसे बड़ा स्वच्छता और पानी, यही हमारा मिशन है. सबसे बड़ा टेलीथॉन यहाँ इस मंच पर 4 नंबर 1 चैनल्स आपके लिए साइमल्टेनियस इस ब्रॉडकास्ट को लेकर आ रहे हैं. तो आप समझ सकते हैं कि इसकी अहमियत क्या है, कितना ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है. ये टेलीथॉन जारी रहेगा, ये सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद. क्रूज मिसाइल से हमला करने का आरोप लग रहा है, उसकी मदद से 200 किलो टन की क्षमता वाला परमाणु बम दागा जा सकता है, और इसकी रेंज करीब 3000 किलोमीटर है. यानी सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, जंग में उसकी मदद कर रहे यूरोप के देश भी इस मिसाइल के हमले की जद में हैं. क्योंकि यूक्रेन के साथ साथ पूरी दुनिया ने देखा था कि क्राइमिया के कर्च ब्रिज पर हमले के बाद क्या हुआ था. पुतिन ने उस पुल पर हुए धमाके का ऐसा बदला लिया था कि यूक्रेन के 7 शहर कांप उठे थे, और कीव पर बरसी मिसाइलों ने भयानक तबाही मचाई थी. इसके साथ ही ज़पोरिजिया और खार्किव जैसे शहरों ने भी पुतिन के गुस्से का स्वाद चखा था. उस वक्त बात सिर्फ एक ब्रिज पर हमले की थी, लेकिन अब तो यूक्रेन का एक पूरा प्रांत ही पुतिन के हाथों से फिसलता दिख रहा है. इसी वजह से यूक्रेन को इस बात का डर सता रहा है कि खैरसॉन का बदला लेने के लिए पुतिन परमाणु हमले की तैयारी में जुट गए हैं, जिसके लिए उनकी सेना ने अपने जखीरे में मौजूद परमाणु मिसाइलों की ताकत को परखना शुरू कर दिया, जिनमें KH-55 क्रूज मिसाइल को सबसे खतरनाक हथियार माना जा रहा है. क्योंकि ये कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं है, बल्कि आसमान में उड़ती मौत है. कहा जाता है कि यह पुतिन के तरकश का वो तीर है जिसका वार कभी खाली नहीं जाता. यानी जिस इलाके में परमाणु बम से लैस KH-55 मिसाइल से हमला होगा, उसकी बर्बादी तय है. इसे लड़ाकू विमान के जरिए बेहद कम ऊंचाई से भी दागा जा सकता है, और बॉमर की मदद से हजारों फीट की ऊंचाई से भी. इसकी ताकत को ज़ेलेंस्की भी अच्छी तरह पहचानते हैं, क्योंकि सोवियत संघ के दौर में ही यह मिसाइल तबाही मचाने के लिए अपनी पहचान बना चुकी थी, और उस वक्त यूक्रेन भी उसी का हिस्सा था. इसीलिए ज़ेलेंस्की को डर है कि अगर पुतिन की मिसाइल अपनी पूरी ताकत के साथ चल गई तो यूक्रेन की धरती को हिलाकर रख देगी. उधर ईरान और इजराइल के बीच तनाव कम होता नहीं दिख रहा. ईरान की फौज के एक पूर्व अधिकारी के इंटरव्यू ने इजराइल की टेंशन बढ़ा दी. इस इंटरव्यू को इजराइल एक सीधी धमकी की तरह देख रहा है, क्योंकि इस इंटरव्यू में यह दावा कर दिया गया कि इजराइल के परमाणु बमों का ठिकाना ईरान जानता है. यह भी कहा गया कि ईरान की मिसाइलों का टारगेट इजराइल के परमाणु ठिकाने ही होने वाले हैं. अगर ऐसा हुआ तो इजराइल के लिए यह तबाही से कम नहीं होगा. अब तक इजराइल केवल इसीलिए टेंशन में था कि कहीं ईरान परमाणु बम बनाने में कामयाब न हो जाए, लेकिन अब तो ईरान से खुली धमकी मिलने लगी है. 2 दिन पहले ही ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा किया था. उस वक्त भी ईरान के अधिकारियों की तरफ से आए बयान इजराइल को उकसाने वाले थे. ईरान ने कहा था कि उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल की जद में पूरा इजराइल है. उसके बाद से ही इजराइल में हड़कंप मचा है. खबर तो यह भी है कि इजराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने नए सिरे से सुरक्षा तंत्र मजबूत करने पर काम शुरू कर दिया है.
लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल का तोड़ मिलने से पहले ही ईरान ने इजराइल की टेंशन बढ़ा दी। अब तो माना जा रहा है कि इजराइल के परमाणु हथियारों के ठिकाने कभी भी तबाह हो सकते हैं, क्योंकि ईरान ने साफ कहा है कि उसके टारगेट पर इजराइल का कोई शहर है ही नहीं, बल्कि वो तो केवल इजराइल का गुरूर तोड़ना चाहता है। दावा किया गया कि ईरान की फौज ने कुछ डमी साइट बनाई हैं जो बिल्कुल इजराइल के परमाणु ठिकानों जैसी हैं। उन जगहों पर मिसाइलें दागकर सटीक निशाना लगाने की प्रैक्टिस की जा रही है। मतलब ये कि ईरान एक बहुत बड़ा हमला करने के करीब है, इतना करीब है कि हमले को कभी भी अंजाम दिया जा सकता है। पिछले करीब 15 दिन में ईरान कई बार इजराइल को हमले की धमकी दे चुका है। यहां तक कि हिजाब आंदोलन से दूर रहने के लिए अमेरिका और इजराइल दोनों को वो चेतावनी दे चुका है। लेकिन ईरान ने अगर इजराइल के परमाणु ठिकाने तबाह किए तो जंग तय हो जाएगी। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन हाड़ कपा देने वाली सर्दी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि ज्यादा ठंड की वजह से यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिलने वाले हथियारों की सप्लाई ठप पड़ जाएगी, जिसके बाद पुतिन की सेना यूक्रेन के सैनिकों पर कहर बनकर टूट पड़ेगी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन सर्दियों में यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह बात अच्छी तरह से पता है कि जब तक जेलेंस्की की सेना को पश्चिमी देशों के हथियार मिल रहे हैं तब तक वो यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से यह दावा किया जा रहा है कि पुतिन सर्दियों के आने तक जंग को सिर्फ खींच रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन को यह लग रहा है कि ठंड बढ़ने के बाद यूरोपीय और पश्चिमी देश अपने आप को सर्दी से बचाने या यूं कहें कि खुद को गर्म रखने में जुट जाएंगे, जिससे उनका ध्यान यूक्रेन की तरफ से हट जाएगा और यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिलने वाले हथियारों की सप्लाई बंद हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो यह जेलेंस्की के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि नेटो देशों से हथियारों की सप्लाई रुकते ही पुतिन की फौज यूक्रेन पर जोरदार तरीके से हमला बोल देगी, जिसके बाद जेलेंस्की के जवानों के सामने रूसी सेना के आगे घुटने टेकने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। यूक्रेन के लिए बुरी खबर यह भी है कि वहां सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, जो मार्च तक चलेंगी, और इस दौरान वहां तापमान -10 डिग्री तक गिर जाता है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन यूक्रेन को सर्दी में जमा देने पर भी तुले हैं। इसी वजह से उनकी सेना पिछले कई दिनों से गैस प्लांटों को मिसाइलों से निशाना बना रही है, जिससे यूक्रेन के कई बड़े शहर अंधेरे में डूब चुके हैं। और परेशानी यह है कि पावर प्लांटों के तबाह होने की वजह से वहां रहने वाले लोगों को ठंड से बचने के लिए बिजली नहीं मिल रही है। इसी बात का पुतिन फायदा उठाने में जुटे हैं। बिजली नहीं आएगी तो हीटर नहीं चलेंगे, जिससे वहां सर्दियां काटनी मुश्किल हो जाएंगी। और माना जा रहा है कि इस ऊर्जा संकट का असर यूक्रेन की सेना पर भी पड़ेगा। एक तरफ रूस से लोहा लेने के लिए यूक्रेन के सैनिकों के पास हथियार नहीं होंगे, तो दूसरी तरफ ठंड से बचने के लिए उन्हें गैस और बिजली नहीं मिलेगी, जिससे जवानों का हौसला पस्त हो जाएगा। Welcome back, ladies and gentlemen, to this very special campaign across Network 18. Today on World Toilet Day, Mission Swachhta aur Paani is powering an elevated dialogue on sanitation empowerment. So over the next 8 hours, we are going to hear from citizens, from governments, from non-profits, sanitation warriors, change makers and policy experts. They will give us a 360-degree view. We're going to be asking each one of them and you what you make of the 5 ways in which each one of us can create an empowered sanitation and water status for India. We'd like to welcome back on stage Ravi Bhatnagar from Reckitt. We're joined by Naina Lal Kidwai, Jyoti Lamba, Pariniti Chopra is of course here with us, and we have a very, very special guest who joins us on the Mission Paani and Swachhta Mission Paani stage today. The G20 Sherpa, Mr. Amitabh Kant, who's just returned from Bali and straight here to Mumbai to join us for this very special occasion. Mr. Kant, may I have you up on stage? Ladies and gentlemen, a big round of applause. The former Niti Aayog CEO and now the G20 Sherpa, Amitabh ji, namaste. Thank you. Thank you for making the effort and joining us. I know that this has been a tough one for you to pull off, Mr. Kant, but I know that you are the only one who could have managed this, flown straight back from Bali and to Mumbai to join us here for this very special campaign. There was no other option when you tell me to come here. I felt the same, so I felt the same. No, but thank you so much, Mr. Kant. We really appreciate it. Before we talk about Mission Swachhta aur Paani, let's talk a little bit about G20. Yeah. It's a big moment for India. Yeah. India takes on the G20 presidency. You've just returned from Bali. Explain to our viewers why this means so much. Shireen, G20 accounts for about 85% of the global GDP.
It accounts for about 78% of the global trade. 90% of the global innovation and patents come from G20 countries, and it accounts for almost about 75% of the global population. It's a very, very important body as far as policy making is concerned, because it comprises of all the G7 developed world. It also comprises of all the major emerging markets. So if you want to make your voice felt, this is really the forum. For many years, India has been responding to the agenda set by the developed world. This is the first time that India will be shaping the global agenda, because it will be the president of the G20. Wow. And that gives India a huge responsibility as far as a vast range of areas is concerned. Sustainable development goals, climate action, digital transformation. I mean, really making a difference to the lives of citizens across the world. You know, you're very right in pointing out that this could be an opportunity for India to shape the agenda and bring new ideas to the table. The Prime Minister also said that India wants to put ideas that will be inclusive and take on leadership that is decisive as we take on the G20 presidency. In the context of the conversation that we're having today, Swachhta and water, what will be our approach on both of these issues? Because these are global challenges, Mr. Kant. So Shireen, to my mind, the most critical thing that this government has pushed in the last 7 to 8 years, it's done a vast number of things, but I think the most important and the most critical initiative that was taken was the Swachhta mission. It was important because, you know, sanitation really impacts a vast range of areas. It impacts health. It impacts nutrition, it impacts education, it impacts the livelihoods of people, it impacts women in many, many ways. And therefore, providing close to about 10.1 crore toilets across India is like providing, you know, every citizen, I mean, the size and scale of that is like providing every citizen of Germany a toilet. That's the size and scale we must understand. Or providing close to about 8.9 million water connections, which is really about 25 million households, is people of India, is like providing, you know, water connection to everyone living in the country of Brazil. That's the size and scale of what we are trying to do. So it's important to understand that this will have a huge impact on their health. It will have a huge impact on you know, nutrition, because in India we have a virtual cycle of malnutrition. That will get hugely uplifted. You know, wasting, stunting, and all this will have a huge, huge impact. If you go to villages of India, if you go to different cities, you know, I've covered Firozabad, I've covered Varanasi, I've covered Balia, Deoria, all these districts of India, where it's made a huge difference to the lives of young children, of women, that their livelihoods have got totally uplifted because of this. Then I went to Nagpur, you know, in a slum area of Nagpur, where, you know, you suddenly started getting, in the slums you started getting 24/7 water connection. And, you know, and that's on a, in Nagpur slum area, it was on a payment basis. It was a PPP scheme, private-public partnership scheme. And the women there in the slum area said that we would any day prefer to pay for water because it's making such a huge difference on the health condition of the entire community there. So it makes a massive difference to livelihoods, you know, and the health burden, the cost of health, which we don't realize, falls very sharply. अमिताभ जी, मैं एक प्रश्न पूछूंगा. G20 पे एक बात है कि thought leadership. So SDG 6 और sustainability पे आपको लगता है भारत is taking the lead? We are showing the path for the world? देखिए, हमने जो काम किया है अभी तक इस स्वच्छता में और अब पानी में जो हम काम कर रहे हैं, ये इस स्केल और साइज पे किसी ने काम नहीं किया. एक तो ये कि हमने टॉयलेट्स बनाए, वो तो आवश्यक था, पर दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है कि आपको बिहेवियरल चेंज लाना सबसे आवश्यक है. क्योंकि आप बाथरूम्स हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बना भी दीजिएगा तो उसको आगे चल के उपयोग करना जरूरी है हर समय.
तो बिहेवियरल चेंज लाना बहुत आवश्यक है और इसमें जो एक्सटेंशन मास कम्युनिकेशन का जो काम हुआ है और जो लोगों को समझाया गया है और तीसरी चीज जो हुई है कि जो नई टेक्नोलॉजी बाथरूम्स बनाने की टॉयलेट्स बनाने की जो नई टेक्नोलॉजी आई है जिसमें कम पानी उपयोग होता है ये सब बड़े ब्रेक थ्रू हुए हैं और बिहेवियर का जो बदलाव आया है भारत में उससे मुझे तो बहुत गर्व होता है कि भारत में सडनली ये एक ख्याल आया है कि सैनिटेशन को हम सेंटर स्टेज लाए और दूसरी चीज कि हम पानी को अब इतने एक जन आंदोलन की तरह पूरे देश में फैला रहे हैं क्योंकि टॉयलेट्स के लिए पानी बहुत आवश्यक है तो अगर हम पानी जब पहुंचाएंगे तो तीसरी चीज जो होगी कि लोगों की हैबिट्स बदलेगी कि लोग कि अपना हाथ धोएंगे और हाथ धोकर फिर उसके बाद सफाई फैलेगी क्योंकि सारा जो इन्फेक्शन फैलता है वो इसलिए फैलता है क्योंकि हम लोग अपना हाथ लगातार नहीं धोते हैं और वो धोना बहुत आवश्यक है। हाथ साफ रखने की बात शुरू होगी बिहेवियरल चेंज तो आप फिर टॉयलेट भी साफ रखना शुरू करेंगे। मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ जो आई थिंक हम लोग बात करना भूल रहे हैं वो है हमारे देश की एक बहुत बड़ी सेक्शन जो है हमारे सीनियर सिटीजन। आप ये समझें कि हमारे जब बाथरूम्स स्पेशली पब्लिक बाथरूम साफ नहीं होते हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए कितना मुश्किल है। मैं सोच रही हूँ उन औरतों की जो साड़ियाँ पहनती हैं मैं उन बुजुर्ग आदमियों की जो चलने में जिनको मुश्किल है अगर वो पब्लिक बाथरूम साफ नहीं है सूखा नहीं है तो आप सोचिए कि उनकी जिंदगी पे कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। हम लोग जो यंग लोग हैं हम कुछ जुगाड़ करके हम लोग कुछ कर सकते हैं बट इमेजिन द सीनियर सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री who need a safe space. No, absolutely. I think the conversation that we're having comes from a very privileged place as well because we've never had to think about not having access to a clean toilet or never having access to water. So I think it is very important for us to understand the complexities of the issue, the constraints that it causes in the lives, daily lives of regular people. You know, women walking kilometers, you know, just to be able to get water, staying up all night just to be standing in lines to get a bucket full of water. I mean, this is the harsh reality and it continues to be the harsh reality. I have seen senior citizens, I beg your pardon, I have seen senior citizens in a simple place like a mall, scared to go to the bathroom and would prefer to reach home and not use that bathroom just because it's not safe for them. Because they don't know if they're going to slip, they don't know if they're going to catch a disease. And most of the youth needs to understand this. They need to understand that change will happen from us for them. Yes, Mr. Kant, you wanted to say something. So, you know, Shireen, for many years I worked in the traditional fisheries sector of Kerala. And, you know, my job was to transform their lives. And one of the challenges there was that, you know, you could provide them new outboard motors, new craft, new nets. But the challenge really was on the health side. And, you know, the health expenditure of a traditional fisherman family was very high because the sanitation conditions were very poor. And because the sanitation conditions were very poor, the infection rate was high and that was leading to very high level of stunting and wasting. And, you know, a very weak mother because of these infections was leading to this. So now, you know, I'd recently gone back to some of these villages and I saw this huge transformation simply because there were good toilets, there was adequate supply of water, livelihoods had been transformed. Absolutely, sanitation and health is linked. Let me also welcome Naina Lal Kidwai into the conversation. Naina, many thanks for joining us on this very special day. And I know you are someone who's been championing the cause of sanitation, of water, of hygiene for about 6 years now when you started the Sanitation Coalition, Naina. You know, I want to understand from you the journey that's been covered, the distance that's been covered, and more importantly, the 5 things, since we're asking everyone to share with us the 5 things that we need to focus on and prioritize, what would those be? So, Shireen, let me first start by thanking CNBC for making this such an important issue. For Rekit Benkaiser, Ravi, who is on our steering committee of the India Sanitation Coalition and all that he brings, Amitabh for the role he's played in ensuring that the competition that is created between cities is one that is absolutely paramount. So when you ask me about the 5 things, I think you have covered some, the criticality of the provision of toilets, absolutely, and what the government has done within that.
the role of communities in ensuring that the whole understanding and linkage between health and sanitation happens. Very thrilled to see the Municipal Corporation of Indore and Punjab profiled by you. We need our municipal commissioners and the leadership they provide at the city level. I would like to add one conversation which those of us who work in the field are still working at, and we have a long ways to go, and that is the treatment side of it. It is not good enough to just now funnel all the shit into these toilets. If we do not treat it, and it goes right back into the fields we had funneled it away from, then it's going to be a national disaster. Yeah. So the cleaning, the sewage treatment, the ensuring that we have recovery of wastewater from that treatment is key. And in order to do this, the infrastructure needs to be provided. It needs to be provided at a very distributed level. Gone are the days where we need just large municipal corporation built plants. We can have smaller plants. They can go into RWAs, into buildings, which is indeed what is mandated. We as citizens have to demand that these are always in working order and that the treatment facilities are indeed working. And believe me, the recovery, whether it be fertilizer in terms of the solid waste that is left, or indeed the wastewater recovery, is going to make it worthwhile. And if we as citizens have to pay for this treatment, then so be it. We must be willing to, because it keeps our environment and our water bodies clean. But the role of the citizen in knowing, demanding, and ensuring that we get the right level of hygiene and cleanliness, whether we're in a city or a village, is very, very critical. What is, Naina ji, namaste. This is Anand Narasimhan here, and this is not just on CNBC, it's on Awaaz, on News18 India, and on CNN News 18. So the entire might of the network is championing this campaign, because that's how important it is. But tell us a little more about the Lighthouse Village project. What is it all about in Uttar Pradesh? I am so happy that you asked. The Lighthouse project is a partnership which the Department of Drinking Water and Sanitation, the ministry at the center, has created, and 75 districts and Gram Panchayats across the country have been selected, of which UP has a number, and these are in Barabanki, in Lucknow, in Haldoi, in Saharanpur. So across these, where corporates have been picked and selected to work in partnership with the grassroots functionaries. And what the government is saying is, look, we have dedicated and committed enough money. We need to make sure that this is well spent. And in fact, at the core of this is the collaboration that the private sector, the not-for-profit and government, and of course the community can provide to make this model work. And the most successful models, whether in sanitation or water or any activity that is engaged in, are those where these collaborations come together. So what the Lighthouse Project has conceived of is, in UP, we have the HCL Foundation, Tata Trust, and ITC as three major corporates who've come in, working with the Aga Khan Foundation, who is a grassroots provider of these services, and of course the panchayats themselves and the mission directors working as a collaboration to ensure that government committed money is spent, that it's spent in a way that is holistic in terms of provision of toilets. But if you look at our India Sanitation Coalition, which is making all of this come together, it is the build, yes, but the use, which comes with community activity, ensuring people use the toilets, maintain the toilets, and the treatment, the bump tea, is so important in this. And in ensuring that water is also provided, and that technology, repair, and innovation solutions are also provided at each level. And this partnership is well underway right now in Uttar Pradesh and of course in other parts of the country to ensure that we can create these model villages for others to follow.
Fantastic. Absolutely. And you know, it's wonderful to hear the birds chirping as Naina Kitwar is speaking. It's absolutely wonderful to have that. But Mr. Kant, I just want to pick up on what we heard there from Naina. And I remember the day that the Swachh Bharat mission was launched, you and Param Iyer joined me that night to speak about the execution roadmap. And the aspect of collaboration, not just government at the center, but local governments, state governments, local administrations, the private sector, the social sector, getting everyone involved to make this a shared responsibility. How apprehensive were you at the start of the mission that without this collaboration, it wouldn't happen? And has this exceeded your expectation, the kind of partnerships that have evolved? Yeah. So let me first compliment Naina for being so passionate about an issue which is of such a major concern for the country. Secondly, you know, I really think that when we started this, we'd not anticipated that there will be such a huge community response. It's been possible largely because of a huge political drive from the top. But I think it's also been possible because we've been able to get the community involved. Thirdly, I think important thing is that we did a huge amount of competition. So one of the things we learned earlier on is that it's very important to get data. Data is important for governance. Put that data in public domain. Start ranking districts, start ranking municipalities, start ranking states. This is exactly what we've done in aspirational districts. We picked up the most backward districts of India. The Prime Minister didn't call them the backward, he called them the aspirational district. We ranked them, we named and shamed poor performance, we appreciated good performance, and once you put out real-time data in public domain, it makes a huge difference. One last point I want to make, which Naina talked about, and that is about creating a business model. It's very, very important that if you want to sustain this over a long period of time, all of us Indians must learn to pay for water and must learn to pay for sanitation as well as we go along. Because each one of us must realize this, that sustaining such a large movement is possible if all of us really are able to help towards creating a great business model. You know, reuse of water, recycling of water, all this requires innovation, all this requires technology of a very good scale, and then we need to take it all across India, and at least the urban people, each one of us who come from middle or upper middle class family, each one of us must learn to pay for it. Pay for it, yes, but also use it responsibly and also take the message forward. So we are hoping to reach at least 200 million people, and we are hoping that at least today through this telethon, and each of those 200 million people, if we can take it to another 5 people, imagine we should be able to take this message to nearly 1 billion people, ladies and gentlemen. That's what we need to do and get talking about it, not just talking, start acting on it too. आज हमारे बीच एक और ऐसी हीरो हैं डॉक्टर ज्योति लांबा, जो अहमदाबाद के गुजरात विद्यापीठ में पढ़ाती हैं और जिन्होंने गुजरात में 10,000 टॉयलेट्स बनाकर गांव वालों की मदद की है। एक टीचर से आप कैसे सैनिटेशन वॉरियर बनी, इसके पीछे का राज जो है वो आपसे जानना चाहेंगे। ज्योति जी, सबसे पहले तो नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, विश्व में बहुत अच्छी हूँ। आइए, आप इधर आ जाइए। ज्योति जी, एक आप हैं जिन्होंने 10,000 टॉयलेट्स बनाए, एक हमारे तमिलनाडु के कंडक्टर हैं जिन्होंने 3 लाख से ज्यादा पौधे लगाए। आपके पास आप में ऐसी सोच कहाँ से आ जाती है, कैसे किया आपने, ये पहले बताइए। सबसे पहले तो आज विश्व शौचालय दिवस की पूरे भारत को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और दूसरी बात, शौचालय पहले बनते थे, लेकिन 2014 से जब नरेंद्र मोदी जी ने, महान विभूति जो हैं, जिन्होंने ये हमारे साथ ये जाहिर कर दिया कि भाई आप शौचालय बनाओ, मैं मदद करूंगा, इससे इतना काम आसान हो गया ना, जैसे कि पतंग हवा में उड़ती है और डोरी पकड़ के चढ़ते हैं ना, ऐसा ये काम हो गया। अब मैंने तो ये शौचालय बनाने का विचार मेरे मन में हमारे गुजरात विद्यापीठ सादरा में कुलपति जी की, नारायण भाई देसाई जी की गांधी कथा थी। उस समय हमारे गांव में काफी विद्यापीठ के और दूसरे गांव के लोग सब आए थे और आजू बाजू सब रहे, तो उस समय जो आए हुए मेहमान थे उनको शौचालय के लिए बहुत तकलीफ पड़ती थी। तो हमारे वाइस चांसलर उस समय सुदर्शन भाई अयंगर थे, उन्होंने ऐसी बात की
कि ज्योतिबेन क्यों ना अपने ये शौचालय का काम वगैरह किया जाए। फिर मैंने हमारे साइंस सेंटर के प्रदीप भाई आचार्य थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया। और जब मैं गांव में गई तो फिर गांव में मैंने गांधी जी के विचार रखे। और गांधी जी के क्या विचार थे कि अंतिम व्यक्ति अर्थात जीवन में जो भी व्यक्ति है उसको जरूरत की चीजें तो प्राप्त होनी ही चाहिए। और फिर गांधी जी की जगह जब मैंने गांव के लोगों को देखा, बहनों को देखा, उसके बाद मैंने अपना हृदय उन बहनों में रखा। क्या बात। तब मेरे को शीशा और दर्पण सामने दिखाई दिया कि एक बहन की परिस्थिति क्या होती है, जो उसको प्राथमिक सुविधा प्राप्त नहीं है तो वो अपना जीवन कैसे जीती है। तो इस प्रकार जब ये जीवन जीना, और वास्तव में चंद्र अपना काम करता है, सूर्य अपना काम करता है, उसे कहना नहीं पड़ता, लेकिन इनको समझाने के लिए हमें सीमेंट और रेत से तो हम मकान बना सकते हैं, स्टील से, लेकिन घर के लोगों को समझाने के लिए एक परिवार, एकता, समूह, सबको समझाने के लिए बहुत मैंने मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। और उससे मैंने जो शौचालय का काम किया, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे को लगा कि वास्तव में जीवन यही है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर थी, और उसके बाद जब मैंने कहा, एक मिनट, जब मैंने कहा लोगों ने कि प्रमोशन ले लो, आप प्रमोशन के लिए फॉर्म भरो करो, तब मैंने क्या सोचा कि गांव के लोगों को, बहनों को मदद करना। और एक बहन अंधेरे की राह देख करके बैठी है कि कब अंधेरा होगा और कब मैं शौचालय जाऊंगी, वो देख करके मेरे मन में जो विचार आए, उन विचारों को देख करके मैंने ये काम आगे किया। आप काम कीजिए, मैं आपसे गले लगाता हूं। थैंक यू सो मच, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया काम किया आपने। आप अहमदाबाद से आई हैं, आप अहमदाबाद से आई हैं, तो अभी आपको दिखाते हैं अहमदाबाद में क्या हो रहा है। लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू अहमदाबाद। केतन जोशी इज जॉइनिंग अस फ्रॉम द सफाई विद्यालय इन अहमदाबाद। This is the original branch of the Harijan Sevak Sangh that was established by Gandhiji in 1932 to bring greater sanitation through instilling a sensitivity and removal of untouchability, as well as fostering the engineering and designing of toilets and sanitation technologies. Ketan bhai, कहाँ हैं आप? ये वही है जहाँ आपने जान की, ये वाली जगह नहीं। देखिए, अभी हम सफाई विद्यालय में हैं, तो स्वाभाविक है कि सफाई की शुरुआत यहाँ से ही होती है। सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि हम कहाँ पर मौजूद है। हम यहाँ टॉयलेट काफे पर मौजूद है, और जो लोग आप देख रहे हो वो टॉयलेट सीट के ऊपर बैठे हैं। मकसद यही है यहाँ के छात्रों को और यहाँ के विजिटर को समझाने का कि आखिरकार सफाई कितनी महत्वपूर्ण है। यहाँ जो लोग बैठे हैं वो सफाई के वॉरियर्स है, गाँव में जाते हैं, लोगों की मुश्किल को समझते हैं। कई बार लोगों के ताने भी इनको सुनने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी सफाई और पानी का अभियान है वो छोड़ा नहीं है। यहाँ जो लोग छात्राएं बैठी है वो भविष्य की टीचर है, अभी से वो गांव में जाती है। गांव की परिस्थिति क्या है वो हम उनसे रूबरू आपको करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले मिलते हैं अनारबेन पटेल से, जो कि इस सफाई विद्यालय में एक्टिव है, ग्राम श्री की ट्रस्टी है और कई सालों से गाँव में जाकर ये काम करती है। कई सारे ताने भी खा चुके हैं, लेकिन फिर भी अपना ये मिशन है वो छोड़ा नहीं है। तो हम अनारबेन से बात करते हैं। अनारबेन, ये मिशन की प्रेरणा आपको कहां से मिली? अभी क्या सिचुएशन है ग्राउंड पर जब आप जाती है तब? गांधी जी की तपोभूमि से, सफाई विद्यालय से आप सबको मेरा प्रणाम। नमस्ते। ये जो सफाई विद्यालय है वो 1963 में ईश्वर भाई पटेल ने चालू किया था। इसके लिए उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। ये ऐसा विद्यालय है जो गांधी जी के मूल्यों आधारित है। गांधी जी बोलते थे कि सैनिटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन फ्रीडम। उन्होंने बोला था कि अगर मेरा पुनर्जन्म होता है तो अति क्षुद्र के घर में हो, जिससे मैं उनका दुख और दर्द समझ सकूं। तो दो तरीके की बात गांधी जी ने बोली। एक था हार्डवेयर, कि घर घर शौचालय बने, और दूसरा था कि हमारी आदतें, कि जिससे हम जो पढ़े लिखे लोग हैं वो गंदगी करते हैं और जो अनपढ़ लोग हैं वो सफाई करते हैं, और जो अनपढ़ लोग हैं हम उनको अछूत मानते हैं। तो गांधी जी का ये विचार था कि जो अस्पृश्यता इसके साथ जुड़ी है वो भी निकले। तो सफाई विद्यालय ने जो काम किया है, करीबन 4 लाख लोगों को यहाँ से ट्रेनिंग दी, क्योंकि जो अलग अलग प्रकार के टॉयलेट होने चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इसके पीछे क्या साइंस होना चाहिए, एक साइड उसका भी काम किया। ईश्वर भाई पटेल खुद आर्ट पढ़े थे, आर्ट्स के स्टूडेंट रहे थे, बट पूरा साइंस उन्होंने इसके पीछे लगाया। उन्होंने इतना तक रिसर्च किया कि एक ह्यूमन
कितना वेस्ट उसके बॉडी से निकलता है, उसको उन्होंने वे किया और उसको देख के फिर उन्होंने टॉयलेट के डिजाइन किए। आज इतना डेप्थ में जाना, और अपने देश में ये 60 साल पहले की बात हो रही है, करीबन यहाँ से ये सफाई विद्यालय से 5 लाख टॉयलेट बने हैं और गांधी जी को मूल्यों को लेकर ये सफाई विद्यालय आगे बढ़ा है। मैं ये बात बोलना चाहूंगी कि गांव-गांव जाना, लोगों को समझाना। उस टाइम पे जब टॉयलेट बनते थे, सरकार की सब्सिडी जाती थी, फिर भी लोग उसमें स्टोर रूम बना देते थे, उसमें से उनको निकालना और छोटी छोटी आदतों तक उनको पहुंचाना। क्योंकि आज हम कितना भी बड़ा काम कर ले, हम 100% टॉयलेट बना भी दें, बट अपने देश की गंदगी निकल नहीं रही है। और उसका कारण क्या है? हमारी छोटी आदतें। जो आदतें अगर हम खुद निकालेंगे, हम खुद वो मिशन में जुड़ेंगे, हम देखेंगे कि हमारे देश को हमको आगे लेके जाना है, तो हम खुद को अपने आप में बदलना होगा। और ये चीज सफाई विद्यालय ने पकड़ी, गांव तक, स्कूल तक ये लेके गए। स्कूल सैनिटेशन पे भी बहुत बड़ा काम हुआ है यहाँ से। और इसका रीजन ये रहा था कि ड्रॉप आउट जो होते थे बच्चियां, वो ज्यादातर ड्रॉप आउट बिकॉज ऑफ सैनिटेशन के कारण होती थी। तो आज अपने देश में जो सैनिटेशन की स्थिति है, जो अभी धीरे धीरे जो हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि लोगों तक, ये आदतों तक इस चीज को पहुंचना चाहिए। और यहाँ पे मेरे साथ और भी लोग हैं, क्योंकि ये टॉयलेट का विषय है और हर क्षेत्र में अलग प्रकार के टॉयलेट बनते हैं। जहाँ पे पानी का स्तर ऊपर है वो अलग टॉयलेट होगा, जहाँ पे पहाड़ी है उसका टॉयलेट अलग होगा। तो हर जगह टॉयलेट अलग है। सिटी में अलग टॉयलेट है, गांव में अलग टॉयलेट है। तो ये जो टॉयलेट कैफे बना है वो पहले टॉयलेट का प्रदर्शन है। पहली बार टॉयलेट का गार्डन अगर पूरे देश में किसी ने बनाया है तो ईश्वर भाई पटेल ने बनाया। ये विचार टॉयलेट गार्डन एंड कैफे। केतन जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस देयर फ्रॉम अहमदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें दिखाया भारत का पहला टॉयलेट कैफे। व्हाट अ वंडरफुल आइडिया टू मेनस्ट्रीम द कन्वर्सेशन। The lady who was speaking, yes, her mother is the former Chief Minister of Gujarat and currently the Governor of Uttar Pradesh, Anandiben Patelji's daughter, but she has taken it upon her to go ahead and take this cause forward on ground. So that's how everybody needs to do it. That's what everybody needs. Well, speaking of action, Mr. Kant, I want to understand from you, what can we expect now over this year as we get ready for the G20? How important is the health aspect and the sanitation aspect linked to health going to be as part of the presidency agenda? So Shireen, my belief is that globally you can't have growth, you can't have progress, you can't lift people above poverty line unless and until you don't focus on sanitation and water. And this is, to my mind, very critical because very vast, 200 post-COVID, it's important to understand that 200 million people have gone below poverty line. 75 million people have lost jobs. Yeah. And therefore, our focus has to be brought back to these basic issues. If we are able to do this, and this would require several things. First and foremost, this would require us to change habits, as was very rightly said, amongst children. We have to inculcate this amongst children. If we are able to do this, it's very important. Secondly, we've brought in a mass movement of toilets and of water. We need to take this to the next stage of what Nana said, the fecal sludge management, which is very important, and of ending plastics. So we need to keep evolving the movement. Thirdly, like Jyoti Behan, we need every Indian to become like her, become really a brand ambassador and become that I am going to convert 100 more people into this. This is very important. Yeah. Fourthly, this can't be a government movement. The government, the Prime Minister has driven it, but it can't be a government movement. It has to be a community movement. And everyone needs to join, and this would require a lot of movement from civil society organizations and from the private sector of India. And therefore, if the private sector has to do it, not only do you need to make new toilets, but you also need to actually bring in a huge behavioral change. At the end of it all, it's all about behavioral change and people of India really asking that this is benefiting them in terms of better health and better nutrition.
Yeah, and that's exactly what we started the conversation with. When Pariniti walked onto stage, she said that she's a citizen in progress. And that's exactly what you're alluding to as well, that all of us as citizens need to evolve, need to change, need to bring in a change of habits and behavior as well. Mr. Kant, I want you to do something very special for us. Before that, we just quickly go back to Ahmedabad. Nirala ji is with us, but I want to go back to Ahmedabad because Ketan is there with some students who are also doing this. So आप कुछ छात्रों से बात करने वाले थे केतन जी? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ स्टूडेंट से बात करवाएंगे जो कि गांव-गांव में जाकर स्वच्छता और पानी को लेकर उनको क्या अनुभव है, आइए उनसे ही रूबरू होते हैं। अच्छा बताइए, आप जब गांव में जाती है, स्वच्छता और पानी के बारे में लोगों से पूछती है, किस तरह का आपको जवाब मिलता है, क्या अनुभव है आपका? मैं अब डीएलएड के कोर्स में पढ़ाई कर रही हूँ। तो जब मैं एक शिक्षक तरीके से स्कूल में गई थी तो बच्चों ने मुझे एक सवाल किया कि क्या हम भविष्य में एक शुद्ध पानी और शुद्ध हवा पा सकेंगे। तो मैं कोई जवाब नहीं दे पाई क्योंकि हमारा भारत वहाँ स्वच्छ हवा और पानी अभी तो है, लेकिन हमारे जो प्रदूषण हो रहे हैं उसकी वजह से भविष्य में क्या पता उन बच्चों को ना भी मिल सके। तो जो जल से लेकर लय तक हमसे जुड़ा है, उस पानी को बचाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। बूंद बूंद से समुद्र बनता है, इसीलिए जल को बचाना है हमें, तो हमें शुरुआत बूंद से करनी पड़ेगी। अभी जो हमारे देश में नल से जल तक का कार्यक्रम जो चल रहा है उसे हम आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए मैं खुद जल को बचाने के लिए मैं खुद से शुरुआत करूंगी। तो आप सब मेरे साथ है करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, पीढ़ी है, उनका भी यही सवाल है। बिल्कुल, अगर आपको कुछ बोलना है एक साथ तो नारा लगाइए। जी 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 जी। नारा का हमारा एक बहुत अच्छा नारा है कि सफाई आंदोलन सफाई आंदोलन जिंदाबाद। उसके साथ में हम जोड़ना चाहेंगे कि हम सब एक है, हम सब एक है और पानी बचाए वो नेक है। नेक है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सारा थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद केतन जी और आप सबको वहां पर जो कि बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। बट वन थिंग शिरीन आई सी एंड दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू चेंज। देयर आर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हु गर्ल्स। Yes. It's time the boys start doing this. And they have to take it up. I couldn't agree more. Saying it. I couldn't agree more with you. But Mr. Kant, we want you to do something very special for us. We've got a preamble that we put together to really take this message not just to parts of India but outside of India as well. And we would like you to honor Jyoti ji, who's here with us, and also Pariniti for championing this cause with us through this day to day. Can we have the preamble? And Mr. Kant, can you please do the honors? The mission Swachhta और पानी preamble. सर एक हमारे संविधान में preamble है और एक इस कैंपेन का preamble है। ज्योति जी आपके लिए है। अरे बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको। अरे इसमें थैंक यू, आभार। लवली। मैं गुजरात विद्यापीठ के कुलनायक कुल सचिव राजेंद्र भाई, हमारे जो पहले कुल सचिव थे खिमाणी, अभी वो कुल नायक हैं, और विद्यापीठ का परिवार जिन्होंने मुझे इस काम में बहुत सहयोग दिया और कभी कभी कार्यक्रम देखने भी आते थे और मेरा ध्यान भी रखते थे। और हमारे यहाँ गांव में जो भी कुछ तकलीफ है वो गांव के कार्य को पूर्ण करते हैं। लेकिन मैं आपसे 5 मिनट देकर कुछ कहना चाहती हूँ कि गांव में जब हम काम करते हैं तो गांव में कैसे शुरुआत की जाती है। मैं भी एक प्रोफेसर थी तो कई लोग मुझे घृणा की दृष्टि से भी देखते थे कि मैं कहाँ इतनी पढ़ी लिखी, बीए में यूनिवर्सिटी फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं, पर मैंने कभी शर्म नहीं की। मैंने ये काम करने के लिए यही सोचा कि एक बहन, एक माता, एक वृद्ध, एक बुजुर्ग यदि शौचालय बन जाता है तो उनको कितनी सुविधा होती है। एक महुंद्रा में एक बहन 8 महीने का गर्भ था उसके पेट में, रात की राह देख रही थी और गांव में तो पति साथ में नहीं जाते, शौचालय नहीं होती, तो बाहर शौच के लिए गई, लेकिन सद्भाग्य से उसकी डिलीवरी मिस हो गई। बहुत दुख हुआ। तब लगता था कि आज शौचालय होता
तो आज ये परिस्थिति नहीं होती। फिर मैंने निश्चय किया कि भले कुछ भी हो, चाहे रविवार हो, चाहे जाहिर रजा हो, तो मैं किसी अपने घर के फंक्शन में ना जाऊं, लेकिन जब मुझे समय मिले तो गांव का कार्य जरूर कराऊं। और एक बहन, एक बेटी जो डिलीवरी करके आई है, उसके घर यदि शौचालय नहीं है, उसके घर स्नानाघर नहीं है, पर्दा लगा करके वो लोग नहाने के लिए बैठे हैं, राह देख के बैठे हैं। और तब ऐसा हुआ कि यदि इनका जीवन और हमारा जीवन तो एक है, मनुष्य तो एक है, मनुष्यत्व सब में है और परमात्मा सब में है, हमारी दृष्टि। और सोचा कि बहुत चीजें तो महंगी हैं, हीरा भी महंगा है, सोना भी बहुत महंगा है, लेकिन उत्तम विचार सबसे सस्ता है। बिल्कुल ज्योति जी, बहुत इसके लिए मुझे मेरे विद्यापीठ के कुलनायक कुलसचिव अनामिक भाई शाह तो मुझे